ठीक है। सेकेंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फेनॉल and ethers. Then aldehyde, ketones and carboxylic acid. फोर्थ में सॉरी नहीं, aldehyde ketone का आप एक रखिएगा, carboxylic acid का अलग, because aldehyde ketones you have too many methods of preparation. Carboxylic acid. In fifth, you are going to have amines. Okay. अब इसी तरह का सेम आप लोग ये एक एक शीट में सारे होने चाहिए. ओके, ट्राई टू कीप दिस इन वन शीट. दिस इज फॉर दोज हु वर नॉट प्रेजेंट ऑन दी सैटरडेज क्लास. ठीक है. देन अच्छा, ओके Adriel, I will see. Then one for chemical properties. Okay, chemical reactions of haloalkane, halorine, alcohol, phenols, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, and then amines. So this will be 5 pages, and these will be 5 pages. Okay, so from these 10 pages, you have all the reactions that are present in organic chemistry. In 10 pages, you will have all the reactions. Okay, now next is you'll prepare one sheet for. You'll take one A4 size sheet, divide it in 2 parts. Write the chapter 1's name, that is haloalkane, halorine. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख दीजिए haloalkane and halorine. ठीक है. अच्छा, और एक चीज, haloalkane and halorine का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पेज है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन का जो पेज है, वो आज मतलब इस वीक में आप लोग फ्राइडे से पहले बना लीजिए, बिकॉज फ्राइडे यू हैव अ टेस्ट ऑन haloalkane and halorine. वन मोर थिंग is that you have test on only haloalkane and halorine. Okay, अगर आप सिलेबस देखिएगा वहां पे अल्कोहल्स भी लिखा हुआ है, अल्कोहल्स नहीं आ रहा है. ठीक है, ओनली haloalkane and halorine. Alcohol is on next Friday. Okay, this coming Friday, no, after this coming Friday, the next Friday जो है वहां पे अल्कोहल आएगा. This Friday you have test only for haloalkane and halorine. ठीक है, so you will prepare this one page, haloalkane, halorine, and chemical properties of haloalkane, halorine. Then in this one page where you are writing all the name reactions. Okay, all the name reactions. So for haloalkane, halorine, whatever name reaction you have, you write that name reaction, just the name, nothing else. Don't write the complete reaction. Okay, just the name. And then you in the bracket write whether it is in MOP or if it is in chemical properties. Okay, so use this thing, and then you will make one more sheet, similar sheet. Oops, पूरा नहीं हो. In this sheet, you will write all the Y type of questions. Give reasons. है ना. तो haloalkane, halorine में बहुत सारे आपके give reasons वाले सवाल होते हैं. For example, KCN gives us nitride, है ना. KCN gives us cyanides, AgCN gives us isocyanide. But you will just write the question. ठीक है, you will just write the question here. Why? Because the answer should be there in your mind. एक, दो या 3 वर्ड्स के कुछ मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हर एक आंसर में, वाई टाइप ऑफ, जो पूरा का पूरा आंसर बता देते हैं. फॉर एग्जांपल, KCN gives us nitride, AgCN gives us isonitride. Why? Because KCN is ionic and AgCN is covalent. अब उसके अराउंड you have the complete answer. You have dichloro, p-dichloro, para-dichloro, benzene. Its melting point, it is higher than ortho and meta isomer. Why? Because it is symmetrical and it has good packing. Okay, so these small answers are there, but you have to write a bit longer answer in the answer sheet. But these are the crux words. These should be included in the answers, and those crux words you should remember it. So you just write the question, no need to write the answer. Answer should be in there in your brain. This is for the end time, like just before the examination, you will have one sheet in which you have give reasons, and you can revise all the give reason questions of all the chapters. ठीक है, प्लीज डोंट राइट द आंसर. ये रिकॉल करना आपके लिए जरूरी है. ठीक है, इस शीट में ना आप लोग आंसर मत लिखिएगा. द आंसर शुड बी देयर इन योर नोटबुक. ठीक है, या फिर आंसर आप यहाँ पे इसके पीछे लिख लीजिए. अगर आपको ऐसे करना है तो इसके पीछे आंसर लिख लीजिए यहाँ पे, लेकिन सारे के सारे सिर्फ सवाल होने चाहिए.
ठीक है, उसका आंसर आप पीछे लिख लीजिए कि अगर याद नहीं आया तो आपने उसको देख लिया। लेकिन दिस शुड बी फॉर टेस्टिंग योरसेल्फ। सिमिलरली नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन का सिर्फ नाम लिखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाके आप उसको चेक कीजिएगा सही कहा कि नहीं आप। ओके, दीज थिंग्स आर फॉर टेस्टिंग योरसेल्फ। नाउ आफ्टर गिव रीजंस यू कैन हैव वन मोर शीट। In this you will write all the chemical tests. ठीक है, हाइड्रोअल्किन हैलोजन में लूकास रिएजेंट वाला टेस्ट है। सेम आपका टेस्ट किसमें है, हैव एन अल्कोहल फेनॉल ईथर। ठीक है, उसके बाद आपके पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में टेस्ट हैं। अल्कोहल्स में भी आपके पास टेस्ट है ना, अगर आपको याद हो। देन यू हैव टेस्ट्स इन अमीन आल्सो, सो यू राइट नेम्स ऑफ ऑल द टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद पीछे आप इसके आंसर लिखिएगा कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। दिस इज फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, दिस इज फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथाइल कीटोन जो होते हैं ना, CH3 जो कार्बन जो आपके पास हाइलोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द बैक साइड। अगेन ये सारे केमिकल टेस्ट भी आपको किस लिए यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस टू टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। अभी देखिए, अभी हाइड्रोअल्किन का कर लीजिए, अगले हफ्ते अल्कोहल फिनॉल्स को बस आप ये चीज प्रिपेयर करके कर लीजिए। इतना कर लीजिएगा तो आपका आधा तैयारी हो जाएगा। नाउ यू कैन डू वन मोर थिंग। ठीक है, यू कैन हैव वन मोर शीट। ये 3 शीट तो हो गया। You can have one more sheet. You just assemble these things और आपके एग्जाम में ना आपको बस यही याद रहेगा, एक शीट याद रहेगा, दैट्स इट। एंड उसी शीट में आपको याद रहेगा, अच्छा ठीक है ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज वाले, ये तो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज वाले पेज में से आया, ये आपका गिव रीजन वाले पेज में से आया, ये आपका केमिकल टेस्ट वाले पेज में से आया। ठीक है, सो यू जस्ट नीड, अगर आपको ये पेज याद रहेगा ना तो आपके लिए काफी हो जाएगा। यू मेक वन शीट फॉर कंपेयर। कंपेयर के भी बहुत सारे सवाल होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 टुवर्ड्स दीज टू, कौन ज्यादा फास्ट SN2 देगा, है ना। सो यू विल राइट दिस क्वेश्चन ओनली एंड देन कंपेयर कर दिया आपने। नंबर 1 हैलोअल्किन हैलोरीन में जितने भी कंपैरिजन वाले सवाल एनसीईआरटी में आपने उनको लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या कंपेयर करना है, SN1 कंपेयर करना है, ठीक है, या फिर SN2 कंपेयर करना है। देन फॉर एग्जांपल आपके पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया कि यू हैव टू टेक दी चेक द एसिडिक नेचर। सो एसिडिक नेचर में आपके पास एक सवाल है, you have COOH and here you have COOH and here you have NO2. What I have to check? Acidic strength. ठीक है, so you try to write all the questions. Answers अगर आपको लिखने हैं, आंसर आप इस शीट के पीछे लिख दीजिए। ठीक है, तो जितने भी कंपेयर करने वाले सवाल हैं एनसीईआरटी ठीक है, उनको आप सारा लिख दीजिए, है ना। अब उसके अलावा बचा गया, यू हैव 10 पेजेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, you have 10 pages of reaction and 4 pages of what, and 4 pages of different type of question that can be asked, name reactions, give reasons, chemical test and compare। अगर ये सारी चीजें आप लोग बस रिपीट करते जाइए, अगर आपको सवाल पता हो ना, एल्डोल कंडेंसेशन एक है नेम रिएक्शन, तो आप जरूर तो उसको चेक करके जाइएगा। अब ये पता ही नहीं कि वॉल्फ किश्नर नाम का कोई रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन नाम का कोई रिएक्शन है ना। ये पता नहीं कि गैटरमैन कोच एक अलग रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन इज अदर रिएक्शन। ठीक है, सो यू रिमेंबर दीज थिंग्स, इफ यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स तभी आप लोग आंसर भी पता रहेगा। सो प्लीज मेक ऑल ऑफ दीज पेजेस। ठीक है, नेम रिएक्शन, गिव रीजन, केमिकल टेस्ट एंड देन कंपेयर all the comparison question for haloalkene halorine, all the name reactions in haloalkene halorine, all the give reason questions in haloalkene halorine, all the chemical test। तैयारी में तो यही करेंगे ना, और कुछ बचा नहीं रहेगा आपकी। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप कर रहे हो तो आप वहां पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये आपका गिव रीजन का सवाल है, इसको हम गिव रीजन वाले शीट में लिख लेते हैं। ये आपका केमिकल टेस्ट वाला सवाल है, क्योंकि अभी तो हैलोअल्किन हैलोरीन पढ़ रहे हैं आप हमारे यहाँ टेस्ट के लिए। एक बार आप फिर से पढ़िएगा एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले बस आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ओनली दीज 4 पेजेस। और फिर रिएक्शन देखने के लिए आप ये 10 पेज जो आपके पास हर एक चैप्टर का मिला के हो जाएगा। ओके, सो प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर दीज थिंग्स। आपकी तैयारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसी तरह हो जाएगी। अब उसके बाद जो आपके पास बचेगा ना, वो बचेगा आपके पास कन्वर्जन के सवाल। ये क्या होगा, अरे why it is getting upward, just a second guys, wait a second।
Okay. Now tell me, guys. Abdurrahman is saying that we have done DNF block. Adriel is saying that he did not. He doesn't remember. We have done DNF block. Samaira, Maimuna, tell me, guys. DNF block is done, not done. So we did. We have not done. We did so. We did it. Maimuna. Yes, we did. अच्छा एड्रियल फिर शायद असल में हमने ना एक तो पहले क्लास कराया था जहां पे हमने आप लोगों को हाईलाइटेड एनसीईआरटी भेजा था एंड विद दैट एनसीईआरटी आई डिड डीएनएफ ब्लॉक मे बी यू वर नॉट प्रेजेंट ओके चलिए राइट द टॉपिक नाउ बायोमोलिक्यूल्स Now, in biomolecules, there are like mainly two portions that we have to run. One of the major portion for biomolecule, it is the amino acid part, okay, carbohydrate parts, and then we have the amino acid and the nucleic acid parts. Okay, so these are the two main categories जो हम लोग को पढ़ना है. Okay, but what are biomolecules? And इसका नाम इस तरह से biomolecules क्यों रखा गया? Biomolecules, these are molecules which are related to life. Okay, and these are building blocks of life. Building blocks of life yani ki these works like different bricks. If you have bricks and it builds a structure, a home, then these things they build life here. Okay, that is why these are known as biomolecules. And the field of the chemistry which deals with these type of molecules, that field is known as biochemistry. That field is known as biochemistry. Okay. Is everyone here now? I think someone joined recently. Who's that from? Living systems are made up of complex biomolecules such as carbohydrates, proteins, nucleic acid, lipids, etc. Okay. Now, the most amazing part of these biomolecules, all of these biomolecules, है ना, carbohydrate, proteins, nucleic acid, mainly यहाँ पे you will see the elements. Carbon will be there, hydrogen will be there, nitrogen, oxygen. There will be some halogens, obviously, okay, and phosphorus. These are the main elements which are present in different biomolecules.
And obviously, all of these elements are what? All of these elements are non-living. Then they make molecules which are non-living. Then they have macromolecules. For example, carbohydrates can be what? Mono also, di also, and poly also. So those are complex. These are macromolecules, big molecules. Those are also what? Those are also non-living. But from that, there are many things which are made. For example, the complete human system, plants, animals, all of them are what? All of them are living organisms. But the elements which they are made up of, the building blocks which they are made up of, those are non-living. Okay, so this is quite amazing. Like from non-living, we are getting a living organism. But how? Okay, so I mean, what is life at all? If you want to ask this philosophical question of life, like for example, if you see a dead person, and if you see like few minutes before he was living, after a few minutes he is dead, we have not taken anything away from him, right? We have not taken anything away from him. All the molecules, everything is still present there, but that is not living anymore. Okay, but related to this is biochemistry, which we are going to deal with. These are the biomolecules. They interact with each other, and then life process happens. Okay, they interact with each other, and then life process happens. For example, disease and curing of disease, and different process that happens in the complete human body. For example, we need enzymes in order to digest, right? We need the nervous system in order to function correctly. We need the skeleton to stand up. We need the skin so that it can prevent, I mean, it can prevent the inner organisms, which are, sorry, inner organs, which are quite delicate. Okay, so each of these organs, they have different work. These organs are also made up of biomolecules only. Okay, so this field of chemistry, it is known as what? Biochemistry. Please write. The field of study of chemistry of living organisms. It's called biochemistry. Now, in this, we'll first of all understand carbohydrate. Write the topic, carbohydrate. Now, carbohydrate, what is the old definition of carbohydrate? Achha, achha. Hydrates of carbon. Done? Okay. Okay, please write. Initially, carbohydrates were defined as the molecules having general formula of some carbon CX H2OY. So this was the general formula for what? Carbohydrate. For example, उस टाइम में ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज was C6H12O6. Okay, so if I want to have
H2O, इसको अगर हम लिखना चाहें तो I can write this as C6H2O whole 6. Yes or no? Can we write this like this? Yes or no? देखिए अभी भी हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, but some molecules, some non-carbohydrate molecules, ऐसे लिख लीजिए, also had same general formula. For example, CH3COOH. What is this? Ethanoic acid or acetic acid. Now I can also write here how many carbons? 2 carbon. Now H2O. You have 4 hydrogens, right? 3 here and 1 here. H2O whole twice. But it is not a carbohydrate, right? It is not carbohydrate, but it is not carbohydrate. Also, carbohydrates such as rhamnose. This has a formula of C6H12O5. Okay. Now this does not fit into the general formula, but it is a carbohydrate. Also, carbohydrates such as rhamnose does not fit in general formula, but it is carbohydrate. Okay. So ये जो old definition था, this was all about the old definition. Now old definition says it is hydrates of, these are hydrates of carbon, but that definition does not hold true for each and every carbohydrate, and also sometimes it is true for even non-carbohydrates. So what is the new definition of, what is the new definition of carbohydrate? Please write. New definition. These are known as polyhydroxyaldehyde and ketones. Polyhydroxy aldehydes or ketones. Okay. There is one more definition, or substances that hydrolyze to give polyhydroxy aldehyde or ketones. Okay, so it can be either only polyhydroxyaldehyde or ketone, or substances. If you are going to hydrolyze them, that means add water and you will get, and you are going to get polyhydroxyaldehyde or ketone. Right, next. Note. Almost all carbohydrates are optically active. That is continued, except one comma 3 dry hydroxy, comma 3 dihydroxy propanol. So we have how many carbon atoms here? We have 3 carbon atoms. 1, 2,
and 3. So we have propanol. This is going to be C double bond O. This one. Okay. So none of the carbon atom here is chiral. 1,3 dihydroxypropanol. Right, next, classification of carbohydrates. ठीक है, classification of carbohydrates में लिखिए. On the basis of number of hydrolyzed product, carbohydrates are classified as number 1 monosaccharides, second oligosaccharides, number 3 polysaccharides. Okay, we have to talk about in detail of monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides के बारे में हल्का हल्का. ठीक है, तो first of all we are going to see monosaccharides. अच्छा, examples आप लोग यहाँ पे देख लीजिए. पहले monosaccharides को what we cannot be hydrolyzed into smaller carbohydrates. ठीक है, oligosaccharides में आपके पास क्या हो सकता है? They can hydrolyzed into 2 to 10 molecules of monosaccharide. Polysaccharide hydrolyzed into more than 10 molecules of monosaccharide. All of you done writing this? You'll write the first topic from here. पहले सबसे पहले लिखिए polysaccharides. थोड़ा सा पढ़ना है इसके लिए.
gives more than 10 monosaccharide unit on hydrolysis. On hydrolysis. ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए. स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन. स्टार्च कहाँ कहाँ मिलता है आपको? रोटी में, चावल में, आलू में, ठीक है, सब में आपको क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा. ठीक है, प्लीज राइट हियर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपके पास इस तरह से रहेगा. इसका एक मोनोसैकराइड यूनिट, इट इज कनेक्टेड विद वन ऑक्सीजन एटम like this, and this oxygen will be connected to another same group like this, which is connected to oxygen, which is connected to another. And OH. Okay. Now this entity will be, let us suppose n times. तो आपको यहाँ पे n moles of monosaccharide unit मिलेगा. ये एक सेकंड, यहाँ पे m लिख लीजिए आप लोग, n मत लिखिए. इसके बाद लिखिए ओलिगोसैकराइड्स. Now, oligosaccharides are classified into two parts: disaccharide gives 2 units of monosaccharide. Okay, and there is one which is, so इसमें example भी लिख लीजिए disaccharide के लिए. जैसे आपके पास माल्टोज हो गया, ठीक है, माल्टोज को आप पानी डालिएगा, then it is going to give you 2 glucose molecules. Okay, similarly आपके पास एक हो गया सुक्रोज. सुक्रोज में आप पानी डालिएगा, H2O, then it is going to give you 1 glucose molecule and 1 molecule of fructose. Right, next.
Trisaccharides gives 3 units of monosaccharide. इसके एग्जांपल में लिख लीजिए. There is a molecule which is known as raffinose. Please write here. एक एग्जांपल लिख लीजिए काफी आपके लिए. If you want to write, then you can write one more example. उसका नाम मेलिटिजोस होता है. Oh, sorry. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 3 चीजों के बारे में पढ़ा. क्या पढ़ा? एक होता है आपका मोनोसैकेराइड which gives 1 unit on hydrolysis. इसके एग्जांपल क्या है आपके पास? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, and then you have galactose, lactose and so on. Then you have oligosaccharide which is going to give you what? 2 to 10 units. Examples यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. सुक्रोज, maltose, lactose, raffinose, and so on. Then you have what? Polysaccharides. This gives more than 10 units of monosaccharides, and the examples will be what? Starch, cellulose. Okay, so these are the examples. Now write the topic monosaccharide. अब monosaccharide के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तो सब डेफिनेशन हुआ है and some examples. Now please write here. Now this monosaccharide, it can be again classified into on the basis of the number of carbon atoms it has and on the basis of what? Functional group. On the basis of carbon atoms and on the basis of functional group. So please write. Classification on the basis what? Number of carbon atom and the classification basis here is the functional group. ठीक है, क्या हो गया? Functional group. For example, if I talk about अच्छा, 3 से कम कार्बन आटम हो नहीं सकते because it should have what? Polyhydroxy aldehyde और कीटोन. तो पॉली के लिए एटलीस्ट 2 आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक में आपके पास एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए. So it will start with 3 कार्बन आटम्स, और जो 3 कार्बन आटम में होता है उसको क्या बोलेंगे? ट्राइओस. जनरल 4 को क्या बोलेंगे? टेट्रोस. 5 को क्या बोलेंगे? पेंटोस. 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सोस. 7th को बोलेंगे हेप्टोस एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप में 2 चीज हो सकता है, आइदर यू आर गोइंग टू हैव एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप. So in functional group also you have to, if you have aldehyde and if you have ketone. ठीक है, अगर आपके पास aldehyde होगा then these are known as aldose, and if you have ketone then these are known as ketos.
ठीक है, अब इन दोनों को मिला लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 3 कार्बन आटम एंड यू हैव द एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्डो ट्राइओस. क्या बोलेंगे इसको? एल्डो ट्राइओस. ओके, एंड देन इफ यू हैव कीटोन, तो इसको क्या बोलेंगे? कीटो ट्राइओस. If you have 4 carbon atoms, then this will be known as aldotetros, and this will be known as ketotetros. Okay, and so on. I hope you get the idea. Done? Yes or no, please tell me. कितना लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन होता है इसका, प्लीज राइट. There is another classification of monosaccharide. ये तो लेकिन जनरली आपके पास ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स के लिए भी इसको किया जा सकता है. दिस इज क्लासिफिकेशन अगेन. Now, some are reducing sugars and some are non-reducing sugars. Some are reducing sugar and some are non-reducing sugar. So what does reducing sugar do? They are going to do what? They are going to reduce the tolerance and valence reagent. Please write. Reduces tolerance and valence reagent. What about non-reducing sugar? Don't reduce or doesn't reduce. Tolerance reagent and valence reagent. Right here. Now, if I talk about the structure of the molecule, this should have at least one hemiacetal or hemiketal functional group. Please write. Should have at least one hemiacetal or hemiketal group. What about this one? Should have acetal linkage. देखिए इसका क्या मतलब है? Hemiacetal का मतलब क्या होता है? You will have one hydroxy and then there will be what? And then there will be one COR group or COC group. तो जनरली आपके पास अगर इस तरह का कुछ हो, कार्बन, there is one carbon atom which is attached with OH and this another carbon is also attached with another carbon. ठीक है, और बाकी आपके पास, एक सेकंड, ये this will be attached with oxygen which is further attached with carbon atom. Okay, if you have this fragment, बाकी आपका ये कार्बन जो है ना, किसी भी R या कार्बन से या फिर किसी R डैश किसी से भी जुड़ा रहे. Now this is known as what? हेमी एसिटल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? हेमीकीटल. ठीक है, अगर ये कार्बन आटम यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा तो इट विल बी एसिटल. If both of these are carbon atom, then it is going to be what? Then it is going to be the ketal group. Please write. If R dash is equal to hydrogen, तो ये क्या हो जाएगा? एसिटल की कैटेगरी में आ जाएगा.
एसिटल, ठीक है। और R डैश और क्या हो सकता है, इट कैन बी CH2OH। और अगर R डैश आपके पास क्या हो गया, CH2OH हो गया, तब ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, ये कीटल के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, इट विल बी द कीटल ग्रुप। अब दिस इज व्हेन यू हैव अ रिड्यूसिंग शुगर। और अगर आपके पास सिर्फ एसिटल लिंकेज है, एसिटल लिंकेज किस तरह का होता है, प्लीज सी, यू हैव कार्बन एटम, now this is connected to oxygen which is further connected to carbon atom, and this carbon is also connected to what, this carbon is also connected to a carbon atom and one R dash। और ये वाला जो कार्बन है ना, इट इज कनेक्टेड टू अनदर ऑक्सीजन विच इज कनेक्टेड टू वन R dash, R dash या फिर कोई R ग्रुप के साथ, कार्बन एटम के साथ ये भी ऑक्सीजन कनेक्टेड है। सो हियर वी हैव वन OH, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप नहीं है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एसिटल। यहाँ पे भी R dash जो होगा, इट कैन बी हाइड्रोजन, एक सेकंड, ये हेमी, यहाँ पे हमने हेमी लिखना भूल गए, फिर इसको रब करके लिखे तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज एसिटल ग्रुप। So if you don't have OH, then it is going to be what? Then it is going to be acetal and it will be non-reducing sugar. ठीक है, एड्रियल, आप अभी अभी तो आप ये पढ़ लीजिए ना बायोमोलिक्यूल। ऐसा नहीं ना डीएनएफ ब्लॉक फिर हम आपको पढ़ाएंगे नहीं अगर आपने नहीं भी देखा है तो, ठीक है। अभी आप इसको पढ़ लीजिए कम से कम। चलिए, राइट अ नोट हियर। इतना अगर आप लोगों ने बना लिया तो फिर आगे नोट लिखिए। ऑल मोनोसैकेराइड्स, all monosaccharides and oligosaccharides, oligosaccharides में except sucrose are reducing sugars। Next point, all polysaccharides and sucrose are non-reducing sugars।
सवाल लिखिए, जवाब दीजिए। Send the answer in chat. Okay, Ahmed has answered. What about others? Please answer. देखिए, यहाँ पे सुक्रोज है तो ये नहीं होगा, एंड डी ऑल्सो है सुक्रोज, सो बोथ ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट आंसर, है ना। तो आपके पास ए तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता बिकॉज सुक्रोज है यहाँ पे, ठीक है। देन यू हैव हेक्सेनॉल एंड एसिडोफेनॉल, ठीक है। आपके पास क्या है? हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल इज अल्कोहल। ओके, इट्स नॉट साइक्लोहेक्सेनॉल, इट इज जस्ट हेक्सेनॉल, नो, ठीक है। तो हेक्सेनॉल तो नहीं देगा आपको, कौन देता है? एल्डिहाइड्स देते हैं। एंड देन यू हैव एसिटोफेनॉल। एसिटोफेनॉल क्या है आपके पास? कीटोन है, तो कीटोन तो कभी देगा ही नहीं, ठीक है। सो दीज टू आर नॉट गोइंग टू गिव यू। तो क्या बचा सर? यू हैव दी ओनली वन आंसर रिमेनिंग, दैट इज बी। इसको टिक कीजिए। ये बताइए क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डोज कहां से स्टार्ट होता है? कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? यस। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से बताइए? एल्डो, हेक्सोस, टेट्रोस, पेंटोस या ट्राइओस? तीन कार्बन से स्टार्ट होता है ना, तीन कार्बन से स्टार्ट होता है, दैट विल बी व्हाट? एल्डो ट्राइओस। इसका आंसर बताइए क्या होगा ये? पेंटोस, पेंटोस, हेक्सोस, कीटो, हेप्टोस, एल्डो, हेक्सोस, क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सी एल्डो है या कीटो है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड टिक द आंसर। ओके, समाइरा ने आंसर किया है। अरे ए बी सी डी लिख दीजिए आप लोग, देखना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, नहीं अहमद, नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। बाकी लोग आंसर एल्डो है या कीटो है, पहले ये देखिए ना। अरे इतना आसान है, इसमें तो गलती नहीं की है आप लोग। बताइए क्या है? दिस इज कीटोनिक ग्रुप, तो कीटो हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो गया? कीटो हेक्सोस। बी विल बी द करेक्ट आंसर।
हाँ ठीक है, वेट नेक्स्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में प्लीज राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मोस्ट कॉमन monosaccharide. It is the most common monosaccharide. Also write next. It's also known as AKA. AKA का मतलब क्या? Also known as dextrose. Because it is optically active and found in nature as dextrorotatory isomer. Dextrorotatory isomer. तो जो आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा, it will be what in nature it will be what always dextrorotatory. Reduces Welling's reagent and tolerance reagent, therefore reducing sugar. ठीक है, sources लिख लीजिए। Can be found in कहाँ मिलेगा आपको? ग्रेप्स में मोस्टली, ठीक है। और फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है इसमें, बट ग्लूकोज हर जगह नहीं। ग्लूकोज आपको मिलेगा ग्रेप्स में, इन हनी यू विल फाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज केन शुगर, स्टार्च में, सेल्यूलोज में। Okay, so you will get from these things. After this, you will write MOP. ठीक है ना। There are two methods of preparation. एक आपका होता है किससे? cane sugar से, that is from sucrose, and then another is from starch. So please write number 1 from cane sugar. Cane sugar का मतलब क्या हो गया? Sucrose. Please write. You have sucrose. Sucrose का फॉर्मूला होता है C12H22O11. When you hydrolyze it in the presence of water, in the presence of acid, hydrolyze add H2 in the presence of acid, you will get C6H12O6 plus you will get C6H12O6. लेकिन इसमें से क्या होता है? This is glucose. This is glucose and this is fructose. From starch. ठीक है, स्टार्च का जनरल फॉर्मूला, स्टार्च इज अ व्हाट? इट इज अ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टार्च में आपका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5. C6H10O5, दिस विल बी प्रेजेंट n टाइम्स। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज स्टार्च। स्टार्च we use an enzyme which is known as diastase. हम तो मतलब our body, diastase। अब ये किस में कन्वर्ट करता है? सबसे पहले माल्टोज। माल्टोज हैज अ फॉर्मूला C12H22O11. दिस इज व्हाट? माल्टोज। ओके,
अब माल्टोज से कन्वर्ट करने के लिए एक होता है एंजाइम जिसको बोलते हैं माल्टेज। माल्टेज से कन्वर्ट करता है किसमें, ये ग्लूकोज में, C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, ये तो आपके बॉडी में जब आपको ग्लूकोज की जरूरत होती है तो स्टार्च से इस तरह से निकलता है। ऑल्सो राइट, ग्लूकोज इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin and high pressure। ठीक है, तो स्टार्च निकालने के लिए दो मेथड है, एक तो आपका एंजाइम वाला डाइएस्टेज एंड माल्टेज यूज करके, एंड देन यू कैन आल्सो बॉयल इट at 393 Kelvin with H2SO4। ठीक है, इसका आंसर बताइए, अभी कराया ये वाला सवाल बिल्कुल। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज क्या देता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विल गिव व्हाट, अरे देख के बताइए भाई आप लोग। हाँ, पहले किसने आंसर किया था, एक ने, अब्दुल रहमान, चेंज किया आपने, हाँ ठीक है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। इसका बताइए, ABCD। इसका आंसर बताइए। ठीक है, इससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6 नहीं, ऑब्टेन्ड बाय केन सुगर, यस, डाइसैकराइड नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कैन रिड्यूस, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल को बताइए, डाइसैकराइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नामुना, देखिए पढ़िए ना, स्टार्च इज चेंज इनटू डाइसैकराइड, डाइसैकराइड के लिए क्या यूज करते हैं, डाइएस्टेज, फिर माल्टेज से
ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माल्टेज, सॉरी माल्टोज से कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज यूज करते हैं, राइट दिस वन। इसमें बताइए एबीसीडी। Carbohydrates have not been classified on the basis of, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के बेसिस में तो हम लोगों ने किया है, राइट। अगर हाइड्रोलाइसिस के बेसिस में डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड्स है, ठीक है। सुगर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी किया है ना, बट वी हैव नॉट क्लासिफाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ सी। सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ऑप्टिकली एक्टिवेट, हाँ सी सही है। ये लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। Which cannot be further hydrolyzed, कौन से होते हैं ये? मोनोसैकराइड होगा ना मैमुना, क्या हो गया आपको? यस मैमुना, Yes, yes. इतना गलती कैसे कर रहे हैं, ध्यान से दीजिए, ठीक है। इट विल बी व्हाट, मोनोसैकराइड। नाउ राइट नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। Okay, so glucose has a structure in which you have CHO, it is an aldehyde, followed by you have CHOH, one hydroxy group, CHOH, another hydroxy group, CHOH, another hydroxy group. You have how many? 1, 2, 3, 4. CHOH, and then you have CH2OH. इसका क्या नाम हो जाएगा बताइए तो जरा। This will be what? Aldo या keto? Aldo. और क्या हो जाएगा? 6 carbon atom, so it will be aldohexose. ठीक है? It is what? Aldohexose. Now, it has one aldehyde group, one CHO group. All of these carbons are what? 2-degree alcohol. And you have what? You have 1, 2, 3, 4 2-degree alcohols. And then you have what? 1 degree alcohol. ठीक है, तो आपके मिला जुला कितने हो गए? 6 हो गए। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ डिड वी डिराइव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। कैसे हम लोग को पता चला दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला आपके पास क्या है? C6H12O6। सबसे पहली बात ये कैसे पता चला दैट देयर विल बी 6 कार्बन एटम? सो प्लीज राइट, first of all, this topic will be
Determination of structure of glucose. ठीक है, तो नंबर 1 prolonged heating with red phosphorus and hydrogen iodide, it forms N-hexane. ठीक है, it forms N-hexane. तो इससे हम लोगों को क्या पता चला? Therefore, glucose has 6 carbons in straight chain. Okay, it has 6 carbon in straight chain. Yeah, the reaction लिख लीजिए. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH, 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 OH. यहाँ पे भी OH. And this is what? CHO. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atom. You have 4 1 degree alcohol, and then you have what? 1 2 degree, sorry, 1 degree alcohol, 4 2 degree alcohol. We react this with red phosphorus, presence of Hi, and we heat it. What do we get? N-hexane. 2, 3, 4, 5, 6. Take the second one. Glucose reacts with hydroxylamine. Hydroxylamine याद है आप लोग को? What is hydroxylamine? याद है किसी को नहीं याद है? NH2OH. Nucleophilic addition of ammonia and ammonia derivatives, है ना? It reacts with hydroxylamine. इसका मतलब aldehyde या ketonic group, carbonyl group present है. It reacts with hydroxylamine. Therefore, carbonyl group is present in the carbonyl group is present in glucose. ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगा इसमें? You will have again same thing, 1 2 3 4 6. यहाँ पे OH कर देते हैं. OH, 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 OH and CHO. C में आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लग दीजिए और यहाँ पे रख देते हैं हाइड्रोजन. ठीक है, CHO. We are going to react this with NH2OH. क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे? कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे Z क्या है? Z is OH here. So you'll have OH attached to nitrogen. This nitrogen will be attached to double bond carbon. और उसके बाद this carbon will have 1 hydrogen. 2 3 4. इसको बोलते हैं ग्लूकोजाइन. Right, next. Glucose gets oxidized. Glucose get oxidized to 6 carbon carboxylic acid. ठीक है, तो 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड.
इससे क्या पता चलेगा हमको? इससे पता चलेगा दैट इट इज कार्बोनिल ग्रुप, इट हैज व्हाट, इट हैज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। व्हाई? क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता ना, कीटोन का ऑक्सीडेशन से 6 कार्बन नहीं मिल सकते, बिकॉज वी नो दैट वी हैव 6 कार्बन एटम एंड वी आर गेटिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद व्हाट, 6 कार्बन एटम। अगर इफ यू हैव एल्डिहाइडिक ग्रुप देन ओनली यू विल गेट व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कीटोन से आपको वार्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। सो प्लीज सी, देयरफॉर aldehydic group is present in glucose, है ना। ऊपर से क्या कंफर्म हुआ था यहाँ से कि इट हैज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल में क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। नाउ वी ऑक्सीडाइज इट विद अ सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो प्लीज सी, you have 1 2 3 4 5 6 OH, here you have CHO, we get here COOH। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप था तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, राइट, बिकॉज एल्डिहाइडिक ग्रुप विल बी एट द एंड कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एंड कार्बन होता है। ओके, नाउ all of these remains as it is, and this also becomes, this carbon atom, it has no COH group। एक सेकंड इसको कर देते हैं, 1 2 3 4, नेक्स्ट लिखिए, 3 हो गया, फोर्थ लिखिए, acetylation of glucose gives pentaacetate, pentaacetate, or rather write pentaacetic anhydride, acetic anhydride। ठीक है, now इससे क्या पता चलेगा? therefore 5 OH groups are present, write the reaction। इस बार ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे OH कर लीजिए, यहाँ पे CHO कर लीजिए। ठीक है, now I'm going to react this with what, acetic anhydride। CH3CO whole twice, and then you have oxygen atom। यहाँ पे जितने भी oxygen atom, they will attack on the carbonyl carbon and they will form what, acetyl group after this oxygen atom। So please write, you will get a molecule such as this one। This CHO will be as it is। यहाँ पे जो आपके पास OH था, this oxygen will be connected to the carbonyl carbon followed by CH3। यहाँ पे जो oxygen था, it will be connected to the carbonyl carbon with CH3। This oxygen will be connected to carbonyl carbon with C double bond and CH3। Then again this oxygen atom will be connected to what, carbonyl carbon double bond of CH3, and this oxygen will also be connected to C double bond of CH3। तो आपके पास क्या मिला है? You have acetic anhydride, कितना हो भी? 5। So you have 1 2 3 4 and 5।
and that means we have what? We have 5 OH groups. So we have 5 OH groups and one aldehyde group is present. So obviously, what will be the structure? It will be having 5 carbon atoms with OH, in which 4 carbon atoms will be having 2 degree alcohol, 1 carbon atom will be having 1 degree alcohol, and 1 carbon atom will be having the aldehyde group. ठीक है, अब एक और रिएक्शन लिख लीजिए प्लीज, राइट. Fifth reaction is on oxidation with dilute HNO3. Dilute HNO3, we get dicarboxylic acid. इसका क्या मतलब है? Therefore 1 degree alcohol is present. So write a note. Write a note. Dilute HNO3 is stronger acid, stronger oxidizing agent than Br2 aqueous. Okay, then Br2 aqueous. Now here the reaction will be 1,2. Br2 aqueous पे एक सेकंड रुकिएगा. अच्छा, wait a second. इसमें ना please this will be OH. Okay, gluconic acid may you will have only one COH. Okay, so please correct this one to OH, not COH. It is stereochemical. Stereochemical structure of glucose. Okay. First of all, this was given by Fisher, Emil Fisher. ठीक है, the Fisher projection जिसको बोलते हैं. इसने क्या बताया? इसने बोला you will have how many carbon atoms? You will have 6 carbon atoms, है ना? So 1 2 3 4 कितने में हो जाएगा? So you have here carbon atom
double bond O and hydrogen, क्योंकि एक aldehyde group है. And here you have what? You have CH2OH. Now here you will have 4 carbon atoms. 1, 2, 3. एक second. Okay, so it will be plus minus plus plus, ऐसे याद रखिए. OH मतलब plus minus plus plus, OH H OH OH. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन. यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास हाइड्रोजन. Now if I write the stereochemical structure, then he said that you have these carbon atoms, 1, 2, 3, 4 carbon atoms. This is dash, which is having CHO group. This is also dash, which is having your CH2OH. And above the plane, you have 2 groups. One is going to be OH here, and one is hydrogen. Here you will also have the 2 groups, OH and hydrogen. Here also you'll have hydrogen and OH. OH and hydrogen. Right till here, let me know if you're done. Well, if you're done, yes or no, please tell me.